Welcome to Education where Foundation of Delhi Sultanate. The Delhi Sultanate was founded in 1206 AD when Qutbuddin Aybak, a Turki military commander, established the first Muslim rule in northern India. फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत कैसी हुई? जो दिल्ली सल्तनत का फाउंडर था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसने 1206 AD में फाउंड किया दिल्ली सल्तनत, जो तुर्की मिलिट्री कमांडर था और जिसने एस्टैब्लिश किया जो फर्स्ट मुस्लिम रूल था नॉर्दर्न इंडिया का। द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत marked the beginning of Islamic rule in the Indian subcontinent. जो फाउंडेशन दिल्ली सल्तनत की हुई, इसने एक बिगनिंग मार्क किया इस्लामिक रूल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। बैटल ऑफ तराइन 1192 AD. The Delhi Sultanate's foundation was largely a result of the Battle of Tarain, in which Muhammad Ghori, a Muslim ruler from Afghanistan, defeated Prithviraj Chauhan, a Rajput king. This battle marked the beginning of Muslim dominance in the region. जो ये बैटल ऑफ तराइन है ये 1192 AD में हुआ। जो दिल्ली सल्तनत जो बुनियाद है वो बैटल ऑफ तराइन से हुई, जिसमें मोहम्मद घोरी एक मुस्लिम रूलर था अफ़गानिस्तान का। उसने डिफीट किया पृथ्वीराज चौहान को जो राजपूत किंग था, और इस जंग ने बिगिनिंग जिसने किया मुस्लिम डोमिनेंस इस रीजन में। Qutbuddin Aybak, after Muhammad Ghori's death, his trusted commander Qutbuddin Aybak established himself as the ruler of Delhi. He laid the foundation for the Delhi Sultanate and became its first sultan. जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, जब मोहम्मद गोरी की डेथ हुई, जब मोहम्मद गोरी मर गया, उसका जो ट्रस्टेड कमांडर था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने वो एस्टैब्लिश हुआ रूलर दिल्ली का, और उसने फाउंडेशन डाली दिल्ली सल्तनत की, और वो फर्स्ट सुल्तान रहा। स्लेव डायनास्टी कुतुबुद्दीन ऐबक's dynasty known as the slave dynasty ruled from 1206 to 1290 AD. He was succeeded by other prominent rulers like Iltutmish and Balban, who further consolidated and expanded the Delhi Sultanate. जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसके डायनास्टी को कहा जाता था स्लेव डायनास्टी, जिसने रूल किया 1206 से लेके 1290 तक। और उसके बाद कुछ अदर प्रोमिनेंट रूलर्स आए, इल्तुतमिश आया, बलबन आया, जिसने फर्दर कंसोलिडेट एंड एक्सपेंड किया दिल्ली सल्तनत। दिल्ली एज द कैपिटल Qutbuddin Aybak established Delhi as the capital of the Delhi Sultanate. The strategic location of Delhi allowed the sultans to maintain control over their vast empire and facilitated communication and administration. जो दिल्ली थी ये कैपिटल थी दिल्ली सल्तनत की। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसने एस्टैब्लिश किया दिल्ली को कैपिटल दिल्ली सल्तनत की। जो ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी दिल्ली, इसमें वो सुल्तान जिसे किंग कहा जाता है वो मेंटेन और कंट्रोल करता था अपनी वास्ट एम्पायर को, और वो फैसिलिटेट करता था कम्युनिकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन भी। इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन द दिल्ली सल्तनत इंट्रोड्यूस्ड इस्लामिc administrative and legal systems, including the
applications of Islamic law, Sharia, coinage with Arabic inscriptions and the establishment of mosques. جو یہ اسلامک ایڈمنسٹریشن ہے دہلی سلطنت نے انٹروڈیوس کیا اسلامک ایڈمنسٹریٹو اینڈ لیگل سسٹم اور ایپلیکیشن کیا اسلامک لا کو جس کو شریعہ کہا جاتا ہے. کوائن ایج کیا عرب انسکرپشنز کے ساتھ اور اسٹیبلش کیے اس نے بہت سارے مسجد. کنسولیڈیشن اینڈ ایکسپینشن اوور ٹائم subsequent sultans expanded the Delhi Sultanate's territory by conquering neighboring regions and kingdoms, including parts of present-day Pakistan and northern India. جو یہ دہلی سلطنت ہے اس نے کنسولیڈیٹ اور ایکسپینشن کیا اوور ٹائم کے ساتھ. جو یہ سلطان ہے اس نے ایکسپینڈ کیا دہلی سلطنت کو کانکرنگ نیبرنگ حاصل کر کے اور کنگڈمز جس میں آتا ہے آج کا پاکستان اور ناردرن انڈیا. کلچرل سنتھسس. The Delhi Sultanate's era witnessed a cultural synthesis of India and Islamic influence. This period saw the development of Indo-Islamic architecture, art and literature characterized by structures like Qutub Minar and the construction of grand mosques. جو یہ کلچرل سنتھسس ہے جو جس دہلی سلطنت وٹنس رہا ہے کلچرل سنتھسس انڈیا میں اور اسلامک انفلوئنس اس نے کیا یہاں. دس پیریڈ سا دا ڈیولپمنٹ آف انڈو اسلامک آرکیٹیکچر اور اس پیریڈ نے بہت ڈیولپمنٹ کی انڈو اسلامک آرکیٹیکچر میں آرٹ میں اور لٹریچر میں جو آج بھی پائے جاتے ہیں دہلی میں جو اسٹرکچرس ہے قطب مینار ہے قطب الدین ایبک کا اور کنسٹرکشن اس نے کیے گرینڈ ماسکز. اوکے اللہ حافظ.